Welcome back, students. I am your SST teacher Vandana Joshi and you are watching SST Joule. So students, in our today's video we are going to start our new history chapter, that is tribes, Dikus and the vision of a golden age. So students, in this chapter we will study the following topics. The topic first is introduction of the chapter, in which we will see who are the tribes and Dikus. Okay, and then after that the second topic will be how did tribal groups live. Okay, so how they were living, what was the procedure through which they were surviving, and what were the things which they were practicing, we will see in this topic. And the third topic is how did colonial rule affect tribals' life. Okay, so in this topic we will see when the Britishers came and the tribes were there and how the Britishers were affected the lives of the tribals. Okay, and after that at the last we will see a closer look of one most popular leader of the tribes. He was known as Birsa Munda. Okay, so students, let's start our first topic, that is introduction of the chapter. So students, let's start our first topic of the day, that is introduction of the chapter. So students, who were the tribes? Tribal or Adivasi were usually the original inhabitants of vast tract throughout India. मीन्स जो ट्राइब्स और आदिवासीज थे वो जो थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि पहले से ही रहने वाले थे. ओके, लगभग वो सारे ही इंडिया में रहते थे, बट मोस्ट आर फाउंड इन हिली एरियाज. बट मोस्टली कहाँ मिलते थे? हिली एरियाज में मिलते थे. ओके, द स्टेट ऑफ बिहार, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल. ओके, यानी कि जो आपके बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, जो भी ये स्टेट्स थी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो ट्राइबल ग्रुप्स की सबसे ज़्यादा थी. ओके, बट दे आर नॉट फाउंड इन अदर स्टेट. ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे या आदिवासी ग्रुप्स थे, ये मोस्टली इन्हीं स्टेट्स में मिलते थे, किसी और स्टेट में ये नहीं मिलते थे. दे मे बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, ये लोग किस हिसाब से डिफाइन किए जा सकते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल विच वर बाउंड टुगेदर बाय अ सिमिलर लैंग्वेज. यानी कि जो लोग सिमिलर लैंग्वेज बोलने वाले होते थे वो लोग एक ही ग्रुप में आते थे. एंड इवन द सिमिलर कल्चर एंड द सेम कस्टम प्रैक्टिस. यानी कि जो भी पर्टिकुलर ग्रुप्स होते थे उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो सिमिलर होती थी, उनके जो कल्चर था वो भी सिमिलर होता था, और उनकी जो कस्टम प्रैक्टिसेस होती थी वो भी सेम होती थी. सो स्टूडेंट्स, इफ यू विल सी about many things are there. So if you will see, they were practicing different occupations. According means उनकी जो ग्रुप्स होते थे उनके सबके जो occupations थे वो भी अलग अलग होते थे. Even they were having different languages. उनकी languages भी different होती थी. Even they lived isolated life, और वो isolated life जीते थे, बट अपने ग्रुप से नहीं. They were living the isolated life from the mainstream society. यानी कि जो mainstream society होती थी, जैसे कि as you know that the tribal groups they were known as Adivasis as well, and they were living mostly in forested and hilly areas. तो उनकी जो लाइफ होती थी वो अपने ही ग्रुप से रिलेटेड होती थी. जो अदर सोसाइटी यानी कि जो थोड़ा डेवलप्ड सोसाइटी थी उससे ये लोग थोड़ा आइसोलेटेड रहते थे. So now let's see how these tribal groups were living and how they were practicing the different things in our second topic. So students, as I told you, the tribal groups were isolated from the society. So how they were living and which things they were practicing, let's see. Students, first of all, few tribal groups they were practicing for the jhum cultivation.
So what is jhum cultivation? Students, the jhum cultivation is also known as different names in the different countries. In our country, the jhum cultivation is also known as slash and burn cultivation, shifting cultivation. Even in few countries, it is known as the milpa and the Sweden cultivation. Okay, so what was the jhum cultivation? Let's see. Students, by the 19th century, tribal people in different part of India, they were involved in a variety of activities. Different type के activities वो use कर रहे थे. So from these activities, one activity was that it is known as the jhum cultivation. So some tribals practice jhum cultivation. कुछ ट्राइब ग्रुप्स जो थे वो झूम कल्टीवेशन करते थे. झूम कल्टीवेशन मीन्स झूमिंग एक तरीके की फार्मिंग टेक्निक थी जो कि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दी है. बट अर्लियर दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट झूम कल्टीवेशन. व्हाट दे वर डूइंग इन दैट, दिस कल्टीवेशन डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक छोटे टुकड़े पे किया जाता था, बहुत बड़े एरिया पे नहीं किया जाता था. मोस्टली दे वर प्रैक्टिसिंग द झूम कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट एरियाज. सो व्हाट दे वर डूइंग दैट, दे आर द कल्टिवेटर्स, दोज वर द कल्टिवेटर्स यानी कि जो फार्मर्स थे, दे वर कटिंग द ट्रीज एंड बर्न वाइल्ड वेजिटेशन, यानी कि वो पेड़ों को पहले काट देते थे और उसके बाद जो पूरा एरिया होता था जहाँ पे उन्होंने पेड़ काटे होते थे उस पूरे एरिया को वो क्या कर देते थे, जला देते थे. देन आफ्टर दैट दे स्प्रेड द ऐश विच कंटेन पोटाश, यानी कि जो ऐश होती थी, राख होती थी, उसको उसमें बहुत सारे, आपको पता होना चाहिए कि जो राख होती है जली हुई उसमें पोटाश होता है, एंड विच इज़ अ वेरी फर्टाइल एलिमेंट फॉर द फार्मिंग. ओके, सो दे वर स्प्रेडिंग द ऐश एवरीवेयर वेयर दे वांट टू सो द सीड. सो दे वर डूइंग दिस टू मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी कि जो मिट्टी होती थी उसको और ज़्यादा फर्टाइल करने के लिए वो लोग ये जो सीड्स होते थे, सॉरी ऐश होती थी, उसको स्प्रेड कर देते थे. देन आफ्टर दैट दे वर सोइंग द सीड्स. आफ्टर दैट व्हाट दे वर डूइंग, दे वर सोइंग द सीड व्हेन आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन. ओके, जब पहली बरसात हो जाती थी राख छिड़कने के बाद, तो उसके बाद वो उसमें बीज बो देते थे. एंड देन आफ्टर दैट दे हार्वेस्टेड द क्रॉप्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, और अक्टूबर तक यानी कि 3-4 महीने में वो जो क्रॉप्स होती थी वो प्रिपेयर हो जाती थी. देन आफ्टर दैट दे वर harvested that. Mostly they were sowing the yam, potatoes and the general crops which were easily grown in these type of area. So first group was practicing for the jhum cultivation. So now you know what is the jhum cultivation. In that cultivation they were cutting down the trees, and after that they were burning the all over area, and then after that they were sowing the seeds on that. Okay, so now see few more tribes were there. They were hunters and the gatherers. So what they were doing in that, so let's see. Students, the tribes based on this type of sustenance economy depended only on forest resources for their livelihood by practicing hunting and gathering. यानी कि जो आपकी हंटिंग यानी शिकार वगैरह चीज़ें हैं, इन सब के लिए ये लोग किस पे बेस्ड रहते थे, फॉरेस्टेड एरिया पे. दे कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक हनी, फ्रूट्स, नट, फायरवुड एंड मेडिसिन्स हर्ब फॉर देयर डेली नीड्स. और जो गैदर से वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जिसमें कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, हनी, फ्रूट्स, नट, फायरवुड, ये भी चीज़ें हैं, इन सबको वो कलेक्ट करते थे. एंड ऑल्सो सोल्ड दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द लोकल मार्केट. और अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए वो इन सब चीज़ों को कहाँ बेचते थे, मार्केट में बेचते थे. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द ट्राइबल ग्रुप, इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, हु इन्वॉल्व इन हंटिंग एंड गैदरिंग वर कोन्स who lived in the forest of Odisha and Baggies of सेंट्रल एशिया. तो इन लोगों को खोन्स और बैगीज़ के नाम से जाना जाता था. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट द अदर ग्रुप्स वर डूइंग. So let's see what the other groups were doing. So some were practicing for the pastorology. In the pastorology they were generally doing the animal husbandry and other things. So how they were doing the pastorology, how they were practicing, let's see.
Students, the pastoralist communities had a different lifestyle. They follow a pattern of cycle movement in search of pastures for their animals. As I told you कि ये लोग क्या करते थे, एनिमल्स पालते थे. तो पास्चर्स यानी कि जो बड़े बड़े चारागाह होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को चराया जाता है, इनके लिए ये जगह जगह घूमते थे. सो मोस्टली इन दैट दे में इंक्लूड वन गुज्जर्स. इसमें आप वन गुज्जर्स को इंक्लूड कर सकते हैं इन पंजाब एरिया. ओके, लबादीज़ इन द आंध्र प्रदेश एरिया, गादीज़ जो कि कुल्लू में होते थे, एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीरी एरियाज. सो देयर वर मैनी पेस्टोरलिस्ट दोज आर प्रैक्टिसिंग फॉर द पेस्ट्रोलॉजी. नाउ लेट्स सी व्हाट द अदर ग्रुप्स वर डूइंग. Students, if we will talk about the other groups, few were they were practicing for the settled cultivation. Means कि वो एक एरिया में रह कर के ही कल्टिवेशन करते थे और वो ज़्यादा सिविलाइज थे. So during the 19th century, some tribes were settled agricultural. वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे? The settled agriculture की प्रैक्टिस करते थे, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर करते थे. Through they supplemented their economy with hunting and other activities. और साथ ही साथ वो हंटिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी करते थे, बट वो ज़्यादातर एक ही जगह पर रहते थे जहाँ पर वो आपका एग्रीकल्चर करते थे. So because they were practicing for the settled cultivation, so the Britishers considered these tribals as much civilizing than the other groups. यानी कि वो ज़्यादा civilized उनको मानते थे. And in that community they were included the Gonds and the Santals. तो यानी कि आपने देखा यहाँ पर कि बहुत सारे ग्रुप्स जो थे वो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करते थे. यानी कि दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़. फ्यू वर प्रैक्टिसिंग फॉर द जूम कल्टिवेशन, फ्यू वर प्रैक्टिसिंग फॉर द हंटिंग, फ्यू वर डूइंग द पेस्ट्रोलॉजी, एंड फ्यू वर डूइंग द सेटल्ड cultivation. So in the next part of video we will see how the Britishers were affected to the tribal groups. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको किस तरीके से अफेक्ट किया.